Hi friends, once again myself Selvarajan of Green Circle on our search for emerging eco warriors. Today we are all at Sector 7 water body Dwarka to have some tree plantation, and this water body is slowly dying. We thought that we will do at least some plantation here so that there will be some greeneries in this area. They belong to Robin Hood Army, and these people, young blood, they were all doing wonderful work, and they were taking initiative to tree for planting the trees, and they have done 10 trees, and they have put these tree gourds also around it. They have watered the plants, and I came to know that these guys are regularly doing some tree planting or others in some other locations also. Robin Hood Army volunteers basically are distributing the food to the needy people and saving the wasted food, distributing them to the needy people is one of the human job for them. Waste wealth and waste management is one of our ideals of Green Circle also. Thanks to some donors in Green Circle, we started this work, and very interestingly I was very much happy to see that the young people are taking active part in this plantation. So I just wanted to know what made them involved in this work when many other people of their age are just relaxing their time and spending their time in viewing films and getting together somewhere just relaxing alone. Most of the youngsters today are missing some of the social works. This is what we are seeing it. But here is a tribe. Those people are very much interested in doing some volunteer work. So we really appreciate them. And today I have seen young kid also along with the Robin Hood Army people. They were all doing this tree plantation work. They were using the spade and they were digging the pits, they were watering the plants, and they were doing dedicatedly. This was giving energy, a revived energy for the senior people like us. आप कहाँ से हैं? आए हम रॉबिन हुड ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अच्छा, कि हमारे सारे वॉल्टियर में अरशद हुआ, दीपाली। क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली। अच्छा, आप क्या आपका नाम क्या है? हम रौनक। और आपका नाम सर? और सो आप लोग रॉबिन हुड आर्मी में क्या करते हो? रॉबिन हुड आर्मी का बेसिकली हमारा ये काम होता है कि जो सर्व फूड होते हैं, एक्स्ट्रा फूडेड जैसे होते हैं, पार्टी फंक्शन होटल जो भी एक्स्ट्रा फूडेड होते हैं जो कि हम वेस्ट करते हैं, बट हमारा एक रूल है कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। जो बेचारे भूखे हैं उस तक खाना पहुंचाना होता है। ओके। इस तरह से हम लोग जो भी एक्स्ट्रा फूड या पार्टी फंक्शन में जो भी बचते हैं फूड उसको हम जहाँ जो तो मंदिर तक हम पहुँचाते हैं। ये हमारा बेसिकली थिंकिंग है। उसका जो भी नीडी पर्सन है, आज हमें ग्रीन सर्कल में जैसे मौका मिला ये करने का ट्री प्लांटिंग के लिए, तो हम ये भी हमारे चल रहे हैं। रॉबिन हुड भी एक ट्री प्लांट कर रहा है कि जो हमें पूरे इंडिया में लगाने हैं। इंडिया के वर्ल्ड ऑफ में ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे प्लांट लगा रहे हैं। इस तरह हमारे सारे रॉबिन मिल करके हर एक जगह प्लांट का भी प्लांट हो रहा है, हर जगह प्लांट लगा रहे हैं। आप सब लोग द्वारका में रहते हो? अच्छा, तो क्या कॉलेज में पढ़ रहे हो? यू आर वर्किंग। कहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी recently I switched. I'm shifting to Jaipur. Okay. How about you? I work with HDFC Bank. HDFC Bank. Oh, you are also a banker. I am also a banker. Okay. ठीक है। और आप? मैं मेडिकल में हूँ एज ए लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। ओके, वेरी गुड। I work at ZS Associates. Okay. Consultants Okay. in Gurgaon.
See, one thing is that आप लोग you have to give food to the people. कई एक बार हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, not always. You cannot give it always, you know. So how do you think that we can uplift the poor people? Actually, we also have business partners, so who provide or donate food to us Okay. To give to the needy. तो हम उनसे भी टाई अप करते हैं एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ समबडी वांट्स टू डोनेट और कंट्रीब्यूट दे कैन एंड वी हैव वीकली ड्राइव्स ऐसे तो बट वेयर कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा कम हो गया था. Okay. अब वो इंक्रीज़ कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. अच्छा, एक बात बताएं, कैसे आप इसको मतलब फूड देने के लिए आपको कुछ पैसा तो ज़रूरत पड़ता है, कैसे मैनेज करते हो? सो रॉबिन हुड आर्मी डज नॉट टेक एनी मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन. ओके. अगर किसी को भी कंट्रीब्यूट करना होता है तो दे हैव टू गिव डोनेशंस इन काइंड. So that's how the organization works. You can contact anyone. We have our contact online on our website. Okay. robinhodarmy.org, I think. Normal Google search. Okay, good. So how do you feel working with Green Circle? Definitely good. Green Circle is completely dedicated for nature and environment. I'm so happy कि parts of Green Earth Circle. Okay. I'm really feeling so proud, and I will try to next time continue. Please. And Please do join us. We are doing the cleaning and greening work. yeah, sure. हम लोग ये काम करते हैं रेगुलरली, और अभी कोविड के वजह से हम लोग थोड़ा सा हम पीछे हैं. सेम आज हम लोग भी ऐसे कोविड की वजह से थोड़ा पीछे हो. Okay, अब हम okay. भी ऐसे एक्टिव होना है, ऐसे आपके साथ ही हम ग्रीन Right. सर्कल में Right. कैसे हम काम करेंगे. और we need to protect the environment and we need to uplift the poor also. Yeah, sure. So all the works are very very important. yeah, sure. So these are all social work. In this young age ना, कई लोग young age में ये काम नहीं करते. They are all spending that time in a very leisurely way. लेकिन आप लोग सर्विस में आ गए ना, ये बहुत अच्छे लगता है मुझे. So you are the hopes of tomorrow. Yeah, sure, sure. You are the hopes of tomorrow. हम लोग तो on the way out. आप लोग इस दुनिया को you have to take charge. So इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. विशाल is also a green circle worker या वॉलंटियर. हमारा लाइफ लाइन है विशाल. विशाल इज़ अ मल्टी फेसेटेड पर्सन. ये डॉग्स एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करता है. और विशाल, आप इन लोगों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? रॉबिन हुड आर्मी आई गेस एक पॉलीबैग जो मूवमेंट थी हमारी, वी यूज्ड इन सेक्टर 6 मार्केट, वेजिटेबल मार्केट. Okay. देन आई मेट मिशेल. इट्स बीन आई थिंक 3-4 years now. And I'm there with them for all the food drives and all other initiatives. All these people are coming? Very. They are regularly आप लोग मिलते हैं. Okay, good. Asad is the main brainstorm. Okay. Then Michelle is there. Good. Vikas Tiwari is there. Okay. So we keep doing. They are the source of inspiration. Young energy है. Okay, बहुत अच्छा very लगता है very इनके nice. साथ काम. Today also we will do one food Yeah, the distribution. food is ready. Food has Okay. arrived. Thank you so much. Feed Very all nice. the Banjara community. Okay, good. Thank you so much. Thank you. So friends, these eco warriors have been doing a wonderful job, and they have joined Green Circle now to do this tree planting campaign, and right now they are going for the Bandara. They want to distribute food, and they are doing it very nicely. They get the donation from well wishers. Today some Green Circle volunteer has given some donation, and these guys are now very busy feeding the people who are nomads, who are living in the pavements in the severe cold, and they are helping them very nicely. So hopefully they will be continuing this work like anything. That young energy will be going on, moving up, and they will do the best work for the society in the future to come. So we greet them all the best, and we treat them as eco warriors and emerging eco warriors. We wish them every best in their career and in their work. Thank you very much for viewing it. Please do subscribe to our channel. Thank you.